Hello class students, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 2, Human Body. Here is some warm-up questions. Rita observes that her teacher is wearing a different perfume today. She is using her sense of. So you have to write the sense organs used and you can write it by yourself. Okay students? Let's know about. Here is internal organs of the human body, respiratory system in humans, deep breathing and air pollution. Now start our chapter. Our body is an amazing machine like all machines. It has many parts, various parts perform various functions. It connects us to our surroundings and helps us to respond. For example, when a running vehicle approaches us, our eyes see it, our ears hear its sound, and the information immediately goes to the brain. The brain now decides what to do and sends information to our limbs to move. दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये क्या होता है कि देखो हमारी जो बॉडी है वो बच्चे डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है और हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है और सभी पार्ट्स जो मिलकर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे कि आपको एग्जांपल गिवन है, सपोज कोई रनिंग व्हीकल आपकी तरफ आ रहा है तो क्या होता है कि आप उसे आंखों से देखते हैं, उसकी आवाज जो है आप अपने कानों से सुनते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके ब्रेन में जो है एकदम से इमीडिएटली चली जाती है। ओके तो क्या होता है कि आपका ब्रेन डिसाइड करता है कि अब आपको क्या करना है और फिर आप क्या करते हैं, आप या तो इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो दीज आर द एक्शंस स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट कि आपकी जो बॉडी है वो कितना फास्ट वर्क करती है। विद इन सेकेंड्स जो है आपका माइंड या आपका ब्रेन जो है डिसाइड कर लेता है कि आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, in this way, all our activities are the outcome of the work of different body parts. Let's now learn about our organ system. Our body is made up of large number of cells. A group of cells is called tissue. Different type of tissues join to form organs or body parts. Our body has 5 sense organs and many other organs. These organs work in groups. A group of organs working together is known as an organ system. An organ system consists of a group of organs that works together to do the same work. These organ systems work together in our body for it to function properly. That means बच्चा क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बनी है और उन सेल्स से क्या बनता है, जब उन सेल्स का ग्रुप बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जब हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो टिश्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं तो बच्चा क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है और हम कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट बन जाता है। अब जब आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो अरेंज होते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और आपके ऑर्गन सिस्टम अरेंज होकर क्या बनाते हैं, बॉडी को फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर हार्ट, lungs, stomach and kidneys. The skeletal system, digestive system, excretory system, respiratory system, circulatory system and reproductive system are major organ system of our body. So these are the organ system students which are present in our body. Okay students, and these are some organs which also help us to do the activities. Okay, now look at this table here. As cells are the smallest part of our body, many similar cells form our tissue. Different tissues form an organ. A group of organs form an organ system. An organism is made up of different organ systems. So these are the formation of a human body, or you can say that this is the formation of our organism body. Okay students, now we will read internal organs of the human body. Okay, internal means बच्चे जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो मतलब इंटरनल जिन्हें आप देख नहीं पाते हो बट ऑर्गन्स हैं। ओके, द इंटरनल ऑर्गन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सर्वाइवल. दे आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस इन आवर बॉडी. द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स आर एज फॉलोज। स्टूडेंट क्या है कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। और वो क्या होता है बच्चा, लोकेट होते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पे। ओके, नाउ वी विल रीड द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. द फर्स्ट वन इज ब्रेन.
Our brain is very delicate and is protected by a skull from outside. The brain controls the entire function of our body. It receives signal from our sense organs and sends information to other parts of the body. It stores information and helps to think and learn new things. It controls functions such as breathing, digestion, muscles control, emotions, heartbeat, etc. सो स्टूडेंट्स, ब्रेन क्या करता है बच्चे? बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट है और वो किससे प्रोटेक्टेड है? हमारे स्कल से प्रोटेक्टेड है। ओके, सो क्या होता है बच्चे, जो हमारा ब्रेन है उसे सिग्नल्स कौन भेज? हमारे सेंस ऑर्गन्स, ओके, लाइक आईज, नोज, ईयर, ओके, स्किन। सो क्या होता है बच्चे, जैसे ही हमारे ब्रेन के पास जो है सिग्नल जाता है वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है और जो रिएक्शन हमें देना है वो उस बॉडी पार्ट को या उस ऑर्गन को वो इन्फॉर्मेशन क्या कर देता है बच्चा? ट्रांसफर कर देता है। और ब्रेन की हेल्प से ही हम नई नई चीजें जो है सीखते हैं और उनको याद रख पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हार्ट। Our heart is very important organ of our body. It works day and night. We can feel a heartbeat by placing our hand or ear on the left side of our chest. Our heart beats about 72 times in a minute. Its function is to circulate blood throughout our body through the blood vessels, arteries and veins. The heart is red-brown colored muscular organ. It is located in slanting position in the center of chest. So student, what is heart? हार्ट इज अ बॉडी पार्ट। ओके, हार्ट हेल्प किस में करता है बच्चे? हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। हार्ट से हमारी बॉडी में क्या होता है? कंप्लीट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ब्लड सर्कुलेशन किसकी हेल्प से होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स की हेल्प से होता है। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हार्ट। सो स्टूडेंट, क्या है जो आपका हार्ट है वो आपकी जो चेस्ट होती है उसके मिड में जो है, आपके सेंटर में जो है लाई करता है। ओके, और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो हम फील कर सकते हैं। जो आपका हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। दैट मीन्स आपके हार्ट में बच्चा कोई बोन नहीं होती है। एंड जो आपकी हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है। गेट इट स्टूडेंट्स? नाउ किडनीज। Kidneys are two bean-shaped organs in our body. The kidneys are located at both sides of our backbone just under the rib cage. The entire blood in our body passes through the kidneys many times a day. Kidney filter water and salts from our blood. The waste get collected in the urinary bladder, thrown out of body as urine. So students, किडनी क्या है? किडनी है वो तो बीन शेप की क्या होती है? पार्ट होते हैं। लुक हियर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ किडनी। सो इस टाइप की आपकी किडनी होती है बच्चा। और किडनी जो है आपकी वो क्या करती है? आपके ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। और जो हमारा जो ब्लड है वो पूरे दिन में हमारी जो किडनी है उससे कई बार जो है पास होता है, ठीक है। जो हमारी किडनीज होती है वो जस्ट अंडर द रिब केज होती है। ओके स्टूडेंट्स, गेट इट? हियर इज लीवर। First, here is a picture of liver. Look at the picture, everyone. This is our liver. Liver lies on the right side of the stomach. It is the largest gland in our body. It secretes and sends bile juice to the small intestine, which help in digestion of food. The liver breaks down fats, filter toxin, harmful substances, and control blood sugar of our body. तो स्टूडेंट, लीवर क्या करता है बच्चे? आपका एक बाइल जूस होता है जो एक डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव मीन्स वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लीवर मेनली उसको सीक्रेट करता है, दैट मीन्स प्रोड्यूस करता है। और किसको दे देता है बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और वो किस में हेल्प करता है? आपके जो फैट्स होते हैं और आपकी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको फिल्टर करने में हेल्प करता है। Do you know the largest organ inside our body is the liver? So जो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट जो है बॉडी पार्ट होता है बच्चा वो क्या होता है? लीवर होता है। ओके स्टूडेंट, here is stomach. Our stomach is the internal organ where most of the digestion take place. It is muscular, elastic, pear-shaped bag under the ribs. From the upper end, it connects to the food pipe, esophagus. Lower parts lead into small intestine. Stomach secretes gastric juices which help in the digestion of food. Here is a picture of stomach. Look at the picture. This is the shape of our stomach.
ओके स्टूडेंट, सो आपका जो स्टमक होता है बच्चे, वो आपके जो उसका अपर पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? आपके ईसोफेगस से कनेक्ट होता है, ठीक है बच्चा। और ईसोफेगस क्या होता है? आपका फूड पाइप होता है, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है आपके स्टमक का वो किससे कनेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और जो आपका स्टमक है बच्चा, वो मेनली क्या करता है? कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को जो है सीक्रेट करता है, जो किसमें हेल्प करते हैं बच्चा? जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, हियर इज बोन्स. All bones in the human body together are called the skeletal system. The skeletal system provides strength and rigidity to our body. We have 206 bones in our body. Each bone has a function. Some bones offer protection to softer parts of the body. For example, some bones offer protection to softer parts of the body. For example, the skull protects the brain and the rib cage protects our heart and lungs. Other bones like bones in our legs and arms help us move and around by providing support to our muscles. So बच्चे, बोन्स क्या होती हैं? बोन्स जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होते हैं। और बोन्स क्या करती हैं बच्चा? मेनली तो हमें एक शेप देती हैं, और शेप में जो वो प्रॉपरली जो आपकी अरेंज्ड होती है बोन्स, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्केलेटल सिस्टम। ओके, सो जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उसमें हमारी सब जो है बोन्स दिखाई देती हैं, और ह्यूमन बींग्स में 206 बोन्स होती हैं। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा, जो आपकी बोन्स हैं वो क्या करती है? कुछ पार्ट्स को सपोर्ट करती हैं, कुछ हमारी बोन्स जो है मूवमेंट में हेल्प करती हैं। लाइक आई मूव माई हैंड विद द हेल्प ऑफ माई बोन्स। ओके, जो मेरी आर्म्स की बोन्स हैं उनकी हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ बच्चा? अपना हैंड मूव कर रही हूँ, अपनी लेग्स मूव कर सकती हूँ। किसकी हेल्प से बच्चा? अपनी बोन्स की हेल्प से। डू यू नो, your funny bone isn't really a bone at all. It is a nerve at your elbow, which is why you feel all tingly why you accidentally hit it. That means जो आपको लगता है ना आपकी एल्बो में बहुत टाइट सी कोई बोन है, नहीं, वहां क्या है बच्चा? नर्व्स हैं। और उन नर्व्स की वजह से आपको, जब आपकी बोन कहीं पे जो आपकी एल्बो है टच होती है तो आपको पेन होता है ना। This is because of nerves. Here is check and mate. Write T for true and F for false statements. Brain controls the entire function of our body. Yes, it is true. Our heart beats about 30 times in a minute. No, it is false. It is about 72 times. Liver lies on the right side of the stomach. No, it is false. We have 206 bones in our body. Yes, it is true. A stomach connects to food pipe. Yes, it is true. Here is respiratory system. The respiratory system is the group of tissues and organs in our body that allows us to breathe. The system includes nose, windpipe, and lungs. The main function of respiratory system to supply oxygen to all the parts of our body. It does this through breathing. ओके बच्चा, नाउ कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से हम ब्रीथिंग करते हैं, और उसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या मिलता है बच्चे? ऑक्सीजन मिलता है। ओके, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है हमारे इन्वॉल्व होते हैं। हियर इज नोज. Now let's discuss about the different parts of respiratory system. The first one is nose. We inhale oxygen-rich air and exhale air filled with carbon dioxide, which is a waste gas. The process of breathing is called inhalation. Nose consists of fine air and a sticky substance called mucus inside it. The nasal hair and mucus traps dust particles and germs, preventing its entry into the lungs. So बच्चे क्या होता है, जब हम नोज से क्या है ब्रीथिंग इन करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है, बट एयर में बहुत सारे जो है आपकी पोल्यूशन बहुत है हमारी एयर में, तो बहुत ज्यादा जो है डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ अनवांटेड थिंग्स होती हैं। तो हमारी जो नोज है बच्चा, उसमें एक म्यूकस, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, और हमारे फाइन हेयर से वो जो डस्ट पार्टिकल्स और अनवांटेड थिंग्स हैं वो क्या हो जाती हैं? वो अंदर नहीं जाती हैं, और अंदर क्या जाता है बच्चे? ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और जो हम जब एक्सहेल करते हैं दैट इज बच्चा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट गैस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ट्रैकिया. It is commonly known as the windpipe. The trachea is an air passes the carries. Commonly known as windpipe, the trachea is air and passes that carries air from the nose to the lungs. So बच्चे, it is a windpipe, और ये क्या करता है? आपकी जो एयर है उसको कैरी करता है नोज से लंग तक। ओके, नाउ lungs.
We have two lungs which together form one of the largest organ in our body. So बच्चे lungs क्या हैं? दो lungs होते हैं हमारी body में. Look at the picture which is given here. In this picture you can see the figure of lungs. The lung on the left is bit smaller than the lung on the right. तो क्या होता है बच्चे, जो आपका लेफ्ट साइड का लंग है वो थोड़ा सा छोटा होता है, किससे? In comparison of right side, because it has to make room for the heart to beat in the chest. So यहाँ क्यों होता है बच्चे? क्योंकि उसे आपके हार्ट के लिए क्या करना होता है? थोड़ा स्पेस जो है देना होता है. Okay, the lung and the heart need to be close together because they work together. So आपके lungs और जो आपका heart है वो बच्चा एक साथ work करता है, इसीलिए वो क्या है? बिल्कुल पास होते हैं. The rib cage goes around the lungs and heart to protect them from damage. The ribs also move when we breathe in and out. So students, क्या होता है बच्चे, जो हमारी rib cage है वो हमारे lungs और हमारे heart को क्या करती है बच्चा? प्रोटेक्ट करती है. लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे रिब भी क्या करते हैं बच्चा? मूवमेंट करते हैं. Below the lungs in diaphragm say diaphragm. This is a big muscle that works with the lungs to get air inhale and out exhale. So हमारा बच्चे जो डायफ्राम होता है वो किस में हेल्प करता है बच्चे? हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करता है, और वो बिगेस्ट मसल्स होती है, वो बिग मसल है जो वर्क करती है लंग्स के साथ. ओके स्टूडेंट, नाउ process of breathing. Here is, when we breathe through our nose, the air moves down through the windpipe and reaches the two lungs. In the lungs, oxygen gets absorbed and enters our blood. The carbon dioxide, a waste product of our body, is thrown out through the windpipe and nose. The blood carries the oxygen to the heart. The heart pump or the oxygen carrying blood to every cell in our body. So breathing makes our blood pure. So students, this is the process of breathing. जैसे हम ब्रीथ इन करते हैं तो एयर अंदर जाती है एक वाइन पाइप की हेल्प से, और वो कहाँ चली जाती है? लंग्स में. लंग्स क्या करते हैं? एकदम से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कहाँ एंटर कर जाती है ऑक्सीजन बच्चे? ब्लड में. ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसकी हेल्प से बाहर आती है? वाइन पाइप और नोज की हेल्प से. ओके, और जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मींस जिस ब्लड में आपके ऑक्सीजन जो है मिक्स होती है उसको क्या कर देता है बच्चे? पूरी बॉडी में जो है ट्रांसफर कर देता है. सो इसके प्रोसेस के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो बच्चे प्योर होता है. डू यू नो योर हार्ट बीट्स ओवर 1 लाख टाइम्स इन अ डे. सो आपका जो हार्ट है वो कितने टाइम्स? 1 लाख टाइम्स एक डे में क्या करता है बच्चा? हार्ट बीट जो है वो होती है. ओके, here is an activity. Put one hand on your chest and the other on your upper part of your tummy. Now breathe in deeply. You will feel your chest and your tummy get bigger as the air goes into your lungs. When the diaphragm contracts, gets tighter, it pushes some of the organs in your tummy down so that there is more space in your chest. So you can feel it, students, so you can do it by yourself. Okay, here is deep breathing. Deep breathing is a simple breathing exercise that helps in exchange of gases. It is a type of pranayama and it practiced during yoga to relax the body and mind. So बच्चा, डीप ब्रीदिंग क्या होती है? एक प्राणायाम होता है जो आप अपने माइंड को रिलैक्स और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं. ओके, नाउ सिंपल प्रोसेस ऑफ डीप ब्रीदिंग. Find a comfortable quiet place or sit or lie down. If sitting, keep your back straight and your feet flat on the floor. Close your eyes, take a deep breath slowly through your nose. Your stomach will swell and expand a little. Hold your breath for seconds and slowly breathe out through your mouth. The stomach will go in when you breathe out. Repeat the process several times to relax your body and mind. बच्चे, दिस इज द प्रोसेस. आपने क्या करना है? कोई क्वाइट सा प्लेस हो, कोई बहुत अच्छी और कंफर्टेबल जगह हो, आपने वहां बैठना है, फिर आपने एक लंबी सी सांस लेनी है और उसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है. देन यू हैव टू ब्रीथ आउट. सो उससे क्या होगा? जब आप इसको 2 से 3 बार 4 बार करेंगे तो यू फील रिलैक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव एयर पोल्यूशन. हियर इज air pollution occurs when gases, dust particles, smoke or odor are added into the atmosphere in a way that makes it harmful to humans, animals and plants. This makes the air dirty. So क्या होता है स्टूडेंट? देखो, आप सबको पता है बहुत सारी चीजें जो है हमारे एयर में
पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, जैसे आपका धुआं जो निकलता है फैक्ट्री से एंड सो मेनी थिंग्स इन द एटमॉस्फेयर। उससे क्या होता है बच्चे, वो सब चीजें हमें इफेक्ट करती हैं और उससे हमारी एयर क्या हो जाती है बच्चा, गंदी हो जाती है। ओके, द हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मेक द एनवायरनमेंट डर्टी आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। दैट मीन्स जो सब्सटेंस आप जैसे डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल, वो आपकी एयर को क्या कर रहे हैं बच्चा, डर्टी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम उनको क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट। It makes the air impure and unsafe for breathing. इससे क्या हो जाएगा, आपकी एयर impure हो जाएगी और unsafe हो जाएगी breathing के लिए। Here is causes of air pollution. Some sources of air pollution come from nature. These include eruption of volcanoes, dust storms and forest fires. So बच्चे ये क्या sources हैं जिनसे air pollution होता है naturally, जैसे वोल्केनो का फटना, आपके डस्ट स्टॉर्म्स का आना या फॉरेस्ट में आग का लगना। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, नेचुरल सोर्स है बच्चा किसके, एयर पोल्यूशन के। ह्यूमन एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय थिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार्स, एयरप्लेन्स, केमिकल्स, फ्यूम्स फ्रॉम स्प्रे कैन्स एंड मीथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल्स। सो बच्चे ये सब क्या है, ये सब वो चीजें हैं जिनसे एयर पोल्यूशन क्या होता है बच्चा, क्रिएट होता है। ठीक है, और ये सब क्या है, मैन मेड थिंग्स है। ओके, व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, oil and natural gas, they release all sorts of gases into the air causing air pollution such as smoke। जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है, वहां पे भी आपका पोल्यूशन होता है, और वो कौन सा पोल्यूशन होता है, स्मोक टाइप का पोल्यूशन। Here's effects of air pollution. The effects of air pollution are alarming. It causes respiratory disease such as asthma, chest pain, lung cancer, and heart disease. So, बच्चे, these are the disease which cause due to of air pollution. Okay. Burning of fossil fuels led to acid rain can cause great damage to human beings. Can cause great damage to human beings, animals, crops and monuments. बच्चे क्या होता है कि अगर आपका एयर पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाती है, और एसिड रेन से ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, क्रॉप्स और मॉन्यूमेंट्स सब क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। Ozone exists in the Earth's stratosphere and is responsible for protecting human beings from harmful ultraviolet rays. Air pollution can cause holes in this ozone layer. So, क्या हो रहा है बच्चे, जैसे आपके ओजोन लेयर में होल हो रहा है, किसकी वजह से, आपके एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, और ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है बच्चा अल्ट्रावायलेट रेज। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हियर इज प्लांट्स मोर ट्रीज टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, use more public transport than private vehicle, and also try to make use of carpooling to save energy. Use CNG fuel for the vehicles and get the pollution check done regularly. Switch off the lights and fans when not in use. Avoid burning polythene bags, wood, leaves and coal. Recycle plastic, paper and other waste materials. Make the people aware about the different ways of reducing pollution. So here are some ways to reduce the pollution. You can do it, and also you aware the peoples about these. Okay students, now we have check and mate. Fill in the blanks with correct words. The lung on the left is a bit smaller than the lung on the right. Okay, here is the blood carries the oxygen to the heart. The harmful substances that make environment dirty are called pollutants. Okay, plants more trees to increase the oxygen level in the air. Okay students, what we learned in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, our body is made up of cells, tissues, organs and organ system. Okay students, our body consists of internal organs and external organs. Internal organs are brain, heart, lungs, liver, stomach and kidneys. A human body has several organ systems that work together to keep it functioning. The parts of respiratory system are nose, windpipe and lungs. Deep breathing keeps the body and mind relaxed. Air pollution makes the air unclean and unsafe for breathing, causing several diseases in humans. Here are some keywords. First one, that is bean shaped. Shaped like a bean. Rigidity. Not able to be changed. Landfills. The disposal of waste material by burning it, especially as a method of filling in pits.
Carpooling refers to the people traveling together in a single car. Okay, students? Thank you, students. We will meet again.